Okay. Good morning, all the students. I hope all of you are doing perfectly well. So basically, in today's lecture, we're going to be continuing the quantum mechanics basics, which we have started. So वही चीज को हम लोग फिर से continue करेंगे. So without any further ado, let's start the class. जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन करें वो लोग एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि if you all can hear my voice properly or not, if the sound is clear or not. एक बार मुझे कमेंट सेक्शन पे आप लोग ये बात बता दो, ठीक है? चलो, if everything is clear, we can start. Just give me a moment so that I can just take a question. बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे. Just hang on for a moment. आप लोग जल्द से जल्द क्लास में जुड़ जाओ, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं. Okay, I hope all the students can see the question now. ठीक है, जरा क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद में सॉल्व कीजिए. ये क्वेश्चन आपका CSIR नेट में आया था. CSIR नेट Feb 2022 इसमें आया था. क्या बोला गया सवाल में? A two-state system evolves under the action of the Hamiltonian given by this, where A and B are its two orthonormal states. The states transform to one another under parity, like parity operator operates on A gives you B, parity operates on B gives you A. If at time t equal to 0, the system is in state with a definite parity t equals to 1, then the earliest time at which the probability of finding the system in a state with parity -1 is equals to what? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को?
तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम का हैमिल्टोनियन निकाल लेते हैं, ठीक है। सो द डायमेंशन of the Hilbert space is 2 and ket A and B form a complete orthonormal basis. Orthonormal basis of this Hilbert space. Full stop. Now Hamiltonian, how your Hamiltonian would look in this basis? Matrix representation of Hamiltonian operator 𝐻 in this basis is, I can write 𝐻 is actually equals to AHA AHB BHA BHB. I'm taking B as the second vector and A as the first vector. So H is my Hamiltonian. You know the value of H. Just carry out this thing. Multiply A on both sides. You're going to get E naught. For this, you take the inner product B, and from this side A, it will be 0. For BA, it will be again 0. For BB, it will be again E naught plus delta. So it is a diagonal matrix. Therefore, A and B are eigenvectors of the Hamiltonian H with eigenvalue E0 and E naught plus delta. The Hamiltonian is diagonal in this basis. Full stop. Therefore, A and B are eigenvectors of H with eigenvalues E naught and E naught plus delta respectively. E naught and E naught plus delta respectively. That's all. हमें ये चीज पता है. Now we can just write it down as well. H cap operates on A, gives you E naught into A. H cap operates on B, gives me E naught plus delta into B. So it's a eigenvalue. We know that if you represent a Hermitian matrix in its own eigenbasis, it becomes a diagonal matrix with the diagonal elements as its eigenvectors. So, well, of course, Hamiltonian is diagonal in this basis, so A and B are the eigenvectors of which with eigenvalues E naught, E naught plus delta respectively. Good. Now, we know that parity operator operates on E gives you B, parity operator operates on B gives you A. There are some extra information. Pi cap operates on A,
gives you B. हम लोग पैरेलल ऑपरेटर को पाई से रिप्रेजेंट करेंगे and pi cap operates on B gives you A. क्या बोला गया है? At t equal to 0, the system is in a state with definite parity p equals to 1. Suppose at t equal to 0, the system is in state psi at t equal to 0 with a parity plus 1. That means I can always write psi at t equal to 0, which is an arbitrary vector of the Hilbert space, in terms of the basis, which is C1 A plus C2 into B. Again, if parity operates on psi of t equal to 0, then I'm bound to get plus 1 into psi of t equal to 0, which means parity operates on this, so C1 pi cap operates on A gives you B plus C2 pi cap operates on B gives you A. That is actually equals to plus 1 into psi at t equal to 0, so C1 A plus C2 into B. Now दोनों साइड से सेम वेक्टर के कोएफिशिएंट इक्वेट करो. यहाँ B का कोएफिशिएंट C है. Just these vectors are ortho normal. I mean these vectors are linearly independent. Since A and B are linearly independent, we know this. Since A and B are linearly independent. Of course, basic vectors linearly independent होंगे ही. Therefore, equating coefficients. So, equating coefficients on both sides. We get, so C1 equals to C2, C2 equals to C1. That means C1 equal to C2. Again, psi at t equal to 0 should be normalized. इसका मतलब psi at t equal to 0, psi at t equal to 0 should be equals to 1. That implies mod C1 square plus mod C2 square should be equals to 1. Now we know that C1 equals to 0, 2 mod C1 square is equals to 1, so therefore C1 is equals to 1 by root 2, the best choice. Therefore mod C1 square plus mod C1 square is equals to 1. That is, mod of C1 can be taken as 1 by root 2. That can be taken as mod of C2. I can take C1 equal to C2 equals to 1 by root 2. So therefore, psi at t equal to 0 can be taken as 1 by root 2 a plus 1 by root 2 b. Now if we leave this state like this, तो ये state अपने आप evolve होगा with respect to time. टाइम के साथ evolve होगा, कोई एक दूसरा state बनेगा. उन्होंने पूछा कि what is the earliest time? What is the earliest time? उन लोगों ने पूछा what is the earliest time t that is the probability of finding the system in the state p equals to -1 is 1.
probability of finding the system in a state p equals to -1 is 1. That means the state have a definite parity of this. So we just need to find out the time, the earliest time or the minimum time after which. So just let me tell you this. Now suppose at small t equals to capital T, the state of the system will be psi of small t equal to capital T. If probability of finding the system with parity -1 is 1, of finding the system at t equals to capital T with parity -1 is 1, it means at t equals to capital T, the system has to be in a state with parity. Probability 1 है तो 100% स्टेट सिस्टम ऐसे स्टेट में है, तो सिस्टम ऐसे स्टेट में है जिसका पैरिटी -1, पैरिटी -1. Therefore pi cap operating on psi of small t equals to capital T should be equal to -1 psi of small t equals to capital T. Now if t equal to 0, you know how to find out t equals to t. बड़ा आसान है सर. पाई कैप t equal to 0 पे स्टेट पता है in terms of the eigenvector of the Hamiltonian. तो स्टेट का टाइम रिलेशन कैसे कराते हो? 1/√2 ket a e to the power of negative of I p0 t by h cut plus 1/√2 ket b e to the power of negative of I e1. e0 नहीं है, e0 प्लस डेल्टा है. e0 plus delta into t divided by h cut, that is actually equal to negative of 1/√2 ket a e to the power of minus I e0 into t divided by h cut plus, मैं थोड़ा खुद का कैमरा ऑफ कर देता हूं so that you all can see properly. 1/2 ket b e to the power of negative of I e0 plus delta t by h cut. That's all. अच्छा, what will you get if you operate pi cap upon this? Pi cap will operate upon, of course, ket a, because this is a scalar, this is a scalar. No, nothing. This will not operate upon this and this. So it will operate upon k. A will give you b. Operate on b will give you a. So on the next page you can very well write. On the next page you can very well write. See, pi cap operation is easy. 1/2 b e to the power of minus I naught t by h cut. 1/2 b e to the power of negative of I e naught
into t by h cut plus 1 by root 2 a e to the power of minus I naught plus delta t by h cut e to the power of minus I e naught plus delta t by h cut, that is actually equals to 1 by root 2a e to the power of minus I e naught t by h cut plus, actually it would be negative, minus, फिर से minus 1 by root 2 b e to the power of negative I e naught plus delta t by h cut. Just because a and b are linearly independent, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, coefficient equate कर सकते हैं. Just because we know that a and b are linearly independent, so we can, or what we can do, we can equate their coefficients, right? That's one thing we can do, just because they are linearly independent. In a state, so let me tell you this. Just equate the coefficients and you're gonna get, अच्छा इधर b का कोफिशिएंट क्या है, ये है, इधर b का कोफिशिएंट क्या है, ये है. अच्छा इधर a का कोफिशिएंट क्या है, 1 by root 2 to the power of minus I, तो 1 by root 2 e to the power of minus I e naught plus delta t by h cut, ये ऑप्शन क्या है, minus 1 by root 2 e to the power of minus I e naught t by h cut. गुड, देखो 1 by root 2 कट जाएगा, e to the power of minus I naught t by h cut, to the power of minus I naught t by h cut कट जाएगा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या पड़ा है, e to the power of minus I delta t by h cut is actually equals to minus 1. मतलब cos of, I mean e to the power of टू m plus 1 into pi, ये हमेशा माइनस में होता है, जहां पे m है तुम्हारा 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट. ठीक है, I can also write it as like minus I. Sin over the cancel. Cos 1 will be cos 2m plus 1 into pi. Cos 2m plus 1 into pi is always minus 1. So don't worry. So equating these two things, I can get delta t by h cut is your 2m plus 1 into pi, and that implies t is 2m plus 1 into pi by h cut. अब हमसे पूछा गया कि मिनिमम टाइम क्या होगा जिसके बाद वो पार्टिकल, सो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी क्या है, m को सिर्फ पुट करेंगे तो मतलब पाई बाई h कट रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू, पाई h कट बाई डेल्टा, पाई है h कट, नीचे आएगा डेल्टा. सो अर्लीस्ट टाइम मीन्स स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ t, smallest value of t, that is actually equals to 2 into the smallest value of m, that is 0
plus 1 pi h cut by delta that is pi h cut by delta. So ऑप्शन बी इज करेक्ट. ये क्वेश्चन सीएसआई नेट फैक्टोरियल का क्वेश्चन है. बहुत बढ़िया सा सवाल था. बहुत बढ़िया सा सवाल था ये. नाउ इसके अलावा कुछ और सवाल है हमारे पास जो मान लो पोजीशन मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन की करस्पॉन्डिंग चीजें हैं, बताया जा सकता है ऐसा. I can tell you that one question actually came on GATE examination. Just hang on and let me get the question. Just hang on for a moment. Okay, I've got it. देखो, I think you all can see the question. I think you all can see the question. इसके ऑप्शंस में बता देता हूं.
These two are option A and B. Option C and D. Good. This is option A, B, C, D. और ये कहां पे आया था? गेट 2023 में आया था. पोजीशन मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन के ऊपर. Wave function of a particle in one dimension psi of x is given by x is greater than minus but less than plus h m and it's zero otherwise. Here m and we are positive constant if phi of p with the corresponding momentum space wave function which one of the following plots best represents phi of p का mod square. So you see we know that कल ही हम लोगों ने देखा कि वन डायमेंशन में in 1D phi of p, the momentum space wave function, is basically 1 divided by root over of 2 pi h cut integration minus infinity plus infinity wave function to the power minus I p x x by h cut ds. Minus infinity to plus infinity e to the power of minus basically जो wave function दिया गया psi of x to the power of minus I px into x by h cut into dx. That's all. Just do the integration and you will tell me how to do it. So wave function हर जगह जीरो है तो psi of x जीरो हो जाएगा. सिर्फ माइनस ए टू प्लस ए के बीच में ही m है. वेरी गुड. तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 by it should be a function of px root over of 2 pi h cut one by root over of 2 pi h cut integration minus infinity to plus infinity. Okay, no. Wave function is zero everywhere, so minus a to plus a. Just write down the value of psi of x is m there. E to the power of minus I px into x divided by h cut into dx. क्या आ रहा है इसका वैल्यू? m को बाहर ले लो just because it's a constant. Root over of 2 pi h cut e to the power of minus I px by x into dx. क्या आएगा इसका? E to the power of minus I px into x by h cut ही आएगा. नीचे आएगा तुम्हारा इसका x का जो कोएफिशिएंट है माइनस I px by h cut. लिमिट पुट करो माइनस ए टू प्लस ए. टेल मी व्हाट यू गोना गेट. h कट ऊपर जाएगा नीचे I px रहेगा. एक काम करो ऊपर बीच I से मल्टीप्लाई कर दो
you're gonna get I square, तो -1 cancel, तो IH cut into M by px into root over of 2 pi h cut। ठीक है, ये चीज है। अब e टू दी पावर ऑफ यहाँ पे एक बार a पुट करोगे x की जगह पे, तो e टू दी पावर ऑफ माइनस आई पी एक्स इंटू ए बाई एच कट, नेगेटिव ऑफ e टू दी पावर अगर माइनस से पुट करोगे तो e टू दी पावर ऑफ प्लस आई पी एक्स इंटू ए बाई एच कट। इसका मतलब क्या है, देखो e टू दी पावर ऑफ x माइनस टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स by 2 is equal to sin h of x, right? Okay, not sin h of x, sin x, I guess, e to the power of ix plus to the power of minus to the power of minus ix, right? Yeah, hang on, this is something I into x, e to the power of minus ix क्या होता है, रुक जाओ, cos x minus I sin x, negative of e to the power of plus I, that is cos x plus I sin x। तो यहाँ पे cos x कट जाएगा, माइनस I sin x माइनस I sin x, तो माइनस 2I sin x आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आएगा I h cut into m divided by px into root over of 2 pi h cut minus 2I negative of 2I into sin of px into a by h cut। So I into I is I square versus minus 1, so this minus 1 will get cancelled out, so simply I'm gonna get 2 अच्छा h cut m by root over of 2 pi h cut, px को नीचे ले लेना, और यहाँ पे तुम देखो करोगे तो √2 से करोगे तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, रूट h कट से करोगे रूट h कट आ जाएगा, तो root over of 2h cut by pi into m into root over of 2h cut by pi into sin of px into a by h cut divided by px, ये है। Therefore mod phi of px का स्क्वायर क्या होगा, मुझे यहाँ पे जो ग्राफ बोला गया mod phi of px का स्क्वायर का ग्राफ बोला गया, तो वो क्या आ जाएगा 2 pi m square 2h cut m square by pi sin square px into a by h cut divided by px square। sin square x by x square का ग्राफ यूजुअली एक गॉसियन फंक्शन जैसा दिखता है, जो तुम लोग डिफ्रैक्शन में काफी बार देखे हो, तो मुझे लगता है ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिफ्रैक्शन वाला जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, तो sin square px into a by h cut divided by px square ग्राफ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो दिस शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो मोस्टली ये क्वेश्चन था मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन से, जहां पे जो चीज मैंने आप लोगों को बता दिया है। अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया खबर है आजकल के बच्चों के लिए, जो भी बच्चे CSIR NET दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, जरा यहाँ से थोड़ा देख लो कि अभी विंटर वॉरियर बोल के एक सेल लाया गया है आप लोगों के लिए, जो भी बच्चे दिसंबर CSIR NET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। So the whole course of the booster course, which is containing all the detailed theory lectures in the recorded format and mostly the PYQs has been solved in the theory classes as well and in the booster live classes as well.
PYQs from various examinations like TIFR, JEST, GATE, CSIR NET, and apart from that, some questions of YKLM as well we have solved in the live classes. इसके अलावा भी बहुत सारे मॉक टेस्ट इस कोर्स में दिया जा रहा है, so that people can revise properly and after that you can appear in the mock test. क्योंकि अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो मॉक टेस्ट देख के जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मॉक टेस्ट टीचेस यू हाउ टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ सिली मिस्टेक्स, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है, सो ऑल दिस थिंग्स, हाउ टू कंट्रोल द एग्जाम प्रेशर, ये सारी चीजें तुम जब मॉक टेस्ट दोगे तभी तुम्हें पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा. एंड मॉक टेस्ट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाके अगर एकदम एग्जाम दोगे तो वो एग्जाम में चांसेस कम है कि तुम सक्सेसफुल हो, तो इसलिए मॉक टेस्ट देना वेरी इंपॉर्टेंट. तो मॉक टेस्ट वगैरह बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आप लोगों को एनॉर्मस नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दिया जा रहा है इस कोर्स में जो बूस्टर कोर्स है. अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को PYQ बुक्स प्रोवाइड होंगे एंड PhD मेंटरशिप प्रोग्राम्स आप लोगों को दिया जाएगा, सो दैट यू कैन गेट टू चूज व्हिच सब्जेक्ट यू शुड टेक फॉर PhD रिसर्च अगर आपका इसके साथ क्रैक हो जाता है तो, या अगर TIFR इंटरव्यू के लिए या जेस्ट मतलब जेस्ट के थ्रू आप किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपका प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से चैप्टर पढ़ के जाना चाहिए, इन सब के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा. So I hope it will be very much helpful to all the people. So जो भी बच्चे CSIR NET December 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, they should surely go for this course, and which the price is 5,279. But don't forget to use the promo code, क्योंकि अगर आप promo code use करोगे तो प्राइस घट के थोड़ा और कम में आपको ये प्राइस मिल जाएगा. तो बेसिकली मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए you can use the promo code, which is my name, SOURAV, सौरभ. जो बच्चे HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए मैं बता दूं कि जो कोर्स का प्राइस है दैट इज 3,499. डोंट फॉरगेट टू यूज द प्रोमो कोड, बिकॉज वंस यू यूज द प्रोमो कोड द प्राइस विल फार टू बी रिड्यूस्ड एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. नाउ सर कोर्स परचेस कैसे करें, उसके लिए मैं बता देता हूं कि आप लोग कैसे कोर्स परचेस करना है. कुछ नहीं, सिंपली तुम लोग कुछ नहीं करना है, सिंपली आप लोग गूगल क्रोम में जाओ और जाके लिखो CSIR NET सुपर कोचिंग. मैं बता देता हूं. आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन नाउ. जस्ट यहां पे जाओ, जाके लिखो CSIR NET सुपर कोचिंग. सबसे पहला वाला जो हाइपरलिंक आएगा उस पर क्लिक कर देना. जैसे क्लिक करोगे देखना पेज खुल जाएंगे. थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना, आप लोगों को मिल जाएगा CSIR NET फिजिकल साइंस बूस्टर कोर्स. क्लिक कर देना, बाय नाउ पे क्लिक कर देना. तो आपको यहाँ पे फोन नंबर देने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे फोन नंबर देके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना. तो देखना प्रोसीड टू पेमेंट आएगा. जब प्रोसीड टू पेमेंट आएगा वहां पे आप लोग क्लिक करोगे तो देखना प्रोमो कोड का ऑप्शन आएगा. प्रोमो कोड का ऑप्शन जैसे तुम लिख दोगे प्रोमो कोड SOURAV सौरभ, विच इज माई नेम, तो आपका प्राइस फर्दर रिड्यूस्ड होकर मैक्सिमम डिस्काउंट पे आपको कोर्स मिल जाएगा. देन यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर. Baki, thank you very much. If you have any doubt, you can let us always know in the comment section or in the Telegram channel, and I will share the PDF on my Telegram channel SOURAV Sir Testbook. Thank you very much. मिलते हैं next class में.